Hi guys, what's up? Ketan here. Alright, so this is the question that I get a lot of times from a lot of students saying that, sir, how do we use the material as far as the MBA entrance exam is concerned? Because you guys have an access to a lot of materials in the market. You guys have an access to a lot of information, online, offline, available in the market. But the point is that when you have so much of material, right, how do you use that in a very efficient way, which will help you to kind of, get the benefit from that material? So let's start and understand what kind of material you have predominantly with you. So you've got class books with you. Okay, you've got books from the authors. Okay, you guys have books from say any other publication. By the way, let's say you have online material, you have some PDFs with you, you guys have certain handouts with you, and you also have you guys have say certain notes with you guys. Okay, so this is basically, I can put it as a landscape of the entire material that you have. Now, how do you use this material in an efficient way? So before you start, assuming like, even if you have joined the coaching class, or you've joined any online coaching, or, if you even have not joined anything, by the way, okay, the first $1 million thing that you need to understand is that you are going to use only and only that material which is going to help you. Okay, now remember this point. This is very important. Something which helps you is the only thing that you're going to use, because I don't want you to be in the rat race, and I don't want you to use a book which is everybody's recommending in the market, because maybe that book is pretty good, maybe that classes material is pretty good, but you're not able to kind of get ahead with it. You're not kind of comfortable using that material because it doesn't help you. So if it doesn't help you, leave it, screw it. Do not use that material. Absolutely. किसी और के लिए अच्छा होगा, तुमको फायदा नहीं हो रहा है, just fuck it, leave it, don't use that. तो पहले वो मटेरियल उठाना जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, जो आपको समझ में आता है, जिसकी लैंग्वेज आपको पता है, जिसके शॉर्टकट्स आपको समझ में आते हैं, जिसके सॉल्व एग्जांपल्स. ऐसे कितने क्लासेस के बुक्स दिखाऊं जहां पे सॉल्व एग्जांपल में ही पंगे है, पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा सॉल्व एग्जांपल कैसा सॉल्व करा गया है. सो यू डोंट नो दिस थिंग्स, राइट? सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बुक, द फंडामेंटल, द कंसेप्ट, डू नॉट यूज दैट बुक, जस्ट कीप इट असाइड. तो पहली चीज वही बुक लेना जिसमें आप कंफर्टेबल हो. फाइन. मार्केट में ऐसे फ्री के एडवाइस बहुत सारे मिलेंगे कि यार ये बुक लो, वो बुक लो, पब्लिक फ्री में एडवाइस देती रहती है. सो यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ फॉल फॉर दैट. सो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड व्हिच आई विल टेल यू. सो बाइफरकेट योर मटेरियल इन 3 categories. The first category is the easy ones which you are okay with, the medium one, and the tough one. This is a category. Now to be very honest, being blunt, I don't have to tell you which class has what category. आप अपने आप से, you are smart people, you can know कि भाई कौन से क्लास का बुक टफ होता है, मीडियम होता है, इजी होता है, all that stuff. What we have done is we have bifurcated our books into 3 segments. One is yellow, one is green, one is blue. Now how it helps you is basically if you are putting your efforts onto green level, you know that कि बॉस ग्रीन लेवल मतलब पूरा कैट का बुक है. तो कैट के बुक के लिए तभी हम हाथ लगाएंगे जब हमारा बेसिक येलो बुक अच्छे से हो जाएगा. जब बेसिक बुक अच्छे से हो जाएगा, देन यू कैन मूव टू द ग्रीन लेवल का बुक एंड देन यू कैन सॉल्व ग्रीन बुक. अगर ग्रीन बुक, मान लो अगर येलो बुक नहीं हुआ है, देन यू आर नॉट सपोज टू टच ग्रीन बुक. ठीक है, बट देयर आर सर्टेन बुक्स जिनमें ये बाइफिकेशन नहीं होता है. ब्लू बुक्स आर डेफिनेटली फॉर सीईटी, बाय द वे. तो यहाँ पे वी हैव गिवन यू बाइफिकेशन. यहाँ पे यू हैव अ गाइडलाइन कि भाई पहले येलो करो, बाद में ग्रीन चलो, बाद में ब्लू चलो, राइट? व्हाट इफ यू डोंट हैव बुक्स, व्हाट लाइक व्हाट इफ यू डोंट हैव बुक्स, जहाँ पे ऐसा बाइफिकेशन नहीं है? आई थिंक नो, देयर आर नॉट बुक्स जहाँ पे ऐसा बाइफिकेशन है अपार्ट फ्रॉम द सीईटी किंग वंस. नाउ व्हाट यू शुड डू इज बेसिकली take a book which is easy for you. Now your main focus, your first focus is going to be on concepts. Okay, the problem with you guys is that you don't worry about concept. The first thing that you look at is questions. Now do not look at a question. See, always remember there is a methodology when you go for study. You cannot just get too desperate for your study that eventually you'll end up doing nothing. So first of all, try and pick up the book which has a good concept clearance, which can solve your conceptual understanding, like which will help you basically, right? So pehla focus should be getting your concepts ready. Once you understand the concepts, then you move on to the second level, which is the solved example. Make sure that concept और solved example में sync होना चाहिए. ऐसे नहीं concept में एक बोला है, solved example में कुछ अलग करके दिखाया है. That's a very dangerous situation. तो पहले कोई भी एक book उठाओ जहाँ पे concept अच्छे से clear किए हैं. Now when you talk about concepts, right? Say I have A, B, C, D and E. So इन सब क्लासेस का मेरे पास मटेरियल है. So what I'm going to do is I'm going to use all the 5 books only for the concept purpose. Okay, so what I'm going to do, say for example one topic, say percentages or interest, or say PNC or trigono, whatsoever, I'm going to learn concept from all these books at a time.
I'm only going to look at the concepts. I'm not going to pip into the questions given by this book. So only concept and concept. So what I'm going to do is I'm going to read concept from here, from here, from here, from across the books. I'm going to make my understanding very clear, because what happens is when you use these 5 to 6 books, or when you use these 4 to 5 books for concepts for that one particular topic, right, 100% guarantee that you will be covering all the concepts and you will not be leaving or losing any concept which will be coming for any of the exam from CAT to CET. So that guarantee is always there. ठीक है, तो पहले हमने क्या करा भाई, पहले सब बुक्स ले लिए, सबका कंसेप्ट पढ़ लिया. When you understand those concepts, my humble request, start making notes. See, making notes is not a problem. You can still make notes here. Like, I know you guys are all MBA aspirants. You're going to be, in next 10 years down the line, you're going to be a CEO and CFO, whatsoever, if at all you get into good B school. If not, then you know how screwed up your life will be, by the way. But anyway, so being an MBA aspirant, don't be ashamed of making notes. Do make notes, right? And make your own notes. How to make notes, I will be making a video on it. I'll tell you in a detailed manner how to make notes, but try to make your notes. So you learned something, you understood something, you did 4 to 5 books, concepts clear, you made note of everything. Now you have an amazing retention. That concept is fixed in your mind. You will not be never forget this concept. नहीं भूलोगे आप, पक्का है, गारंटी है, राइट? तो ये स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है? पहले कंसेप्ट करो, अपने नोट्स बना लो. Once you are done with the notes, right, take a book which has easy level के sums. Okay, do not try to be so fucking adventurous कि सीधा बुक उठा लिया and सीधा स्टार्ट कर लिया टफ लेवल के क्वेश्चंस. बिल्कुल मत करना, ये मत करना. पहले इजी लेवल पे क्वेश्चन करो, ठीक है? I'll give you one instance. I'm not sure अभी भी ये होता है कि नहीं, but यहाँ पे the board that I appeared for, like how it used to happen is basically the maths paper, the board paper, like we used to have this A, B, C and D kind of questions. Okay, ये ऐसा होता था हमें कुछ. तो हमें पता है कि भाई A और B जो है वो बुक में से आएगा, ठीक है? So A and B questions are like easy ones, ये बुक में से आएगा पक्का. तो हम what we used to do, we used to clear all book का questions, पूरा सॉल्व कर करके वो खत्म कर देते थे, बिकॉज गारंटी था कि भाई बुक से आएगा, नंबर चेंज होगा. सी जो होता है, सी में क्या होता है, थोड़ा सा टफ लेवल आ जाता है, मतलब या इट इज कमिंग फ्रॉम योर बुक बट थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाएगा आपका, ठीक है? एंड डी क्या होता है, डी होता है बेसिकली बाहर का बुक, मतलब ये क्वेश्चन ना बुक से आएगा ना कहीं से आएगा, बट ये कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा. और ये जो डी वाला होगा वो पक्का फाड़ क्वेश्चन होगा, जिसके लिए यू हैव टू पुट इन योर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी. सिंपल. So what we used to do, we used to move from easy to tough, मतलब A से लेके D तक. तो हम करते क्या थे बेसिकली, जितना भी पहले इजी वाला मार्क्स बनता है भाई, पहले उसको ले लो, पहले उसकी प्रिपरेशन कर लो. जो टफ वाला है उसको एंड में रखो. Just for the fact you're going for CAT, it doesn't mean that you have to start from D and then move on to A. No, that's being really idiotic. Don't do that. Start step by step. But सर बहुत टाइम लगेगा, 4 महीना CAT के लिए, ठीक है? टाइम लगेगा तो put in extra hours. Simple, है ना? Put in extra hours. See, rather than cracking, cracking 30-40 questions in next 2 hours, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, like 2 घंटे में आप क्वेश्चन क्रैक कर लोगे, 2 घंटे में मान लो 40 क्वेश्चन क्रैक कर लिए, वेरी गुड, राइट? बट 2 दिन के बाद अगर सेम टॉपिक दिया जाएगा, क्रैक नहीं हो पाएगा, बिकॉज देन लाइक भूल गया जो भी करा था. तो इससे अच्छा है कि भाई 2 घंटे में हम 20 क्वेश्चन करें, बट कंसेप्चुअली अच्छे करें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, राइट? दैट विल हेल्प यू लॉन्ग टर्म में, राइट? फाइन. तो इजी से लेके हम टफ पे चलेंगे. तो दिस इज द वे वी यूज्ड टू डू. वी यूज्ड टू टेक इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. तो टेक अ बुक व्हिच हैज लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस. तो स्टार्ट सॉल्विंग इजी क्वेश्चंस. कितना भी क्वेश्चंस करो, आई हैव नो कैप एंड फ्लोर ऑन इट. 50, 60, 100 व्हाटएवर, जितना कैपेसिटी उतना क्वेश्चंस आप कर लो, ठीक है? बट एक चीज आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक चीज में कि भाई जितना भी इजी लेवल है मैं कर सकता हूं. नाउ अंडरस्टैंड दिस. This is how you bifurcate your exam preparation. So if I say in arithmetic, right, say percentages, profit and loss, interest, averages, time, speed, distance. Basic level का questions मुझे आता है, easy level का questions मुझे आता है, ठीक है? मतलब you are done for SNAP, NMAT, CMAT, CET, TISS, MAT, ATMA. Simple. Fine. So put yourself in a bucket. Put your preparation in a bucket. Do not do your preparation haywire. Please don't do that. तो इतना पता होना चाहिए कि भाई इजी लेवल तो मेरा हो गया. नाउ ये मेरे जो एग्जाम्स है उसके लिए आई एम रेडी, ठीक है? स्टिल कंडीशंस अप्लाई. आई विल कम बैक टू दिस स्टार लेटर ऑन. नाउ वंस दिस इज डन, देन यू मूव ऑन टू मीडियम लेवल.
Okay, then you move on to medium level. यहाँ पे थोड़े से tough questions आप उठाओगे. Then you take a book which has a medium level. Okay, then remember, rather, then what is left is like your tough level. ठीक है, अब आपको ऐसी क्लास की बुक उठानी है, आपको ऐसे ऑथर की बुक उठानी है जहां पे आपको वैरायटी मिलेगी. मतलब मान लो कोई क्लास की बुक है जहां पे आपको परसेंटेज के ऊपर एक मान लो 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट ये 30 के 30 क्वेश्चन जो है इट्स व्हाट यू से, ये पूरा मिक्सचर है. मतलब 30 के 30 पूरा मिक्सचर है. इसमें इजी भी है, इसमें टफ भी है, और इसमें मान लो मीडियम भी है. कीप दिस बुक इन दी एंड. ऑनेस्टली कीप दिस बुक इन दी एंड, बिकॉज आपने इजी कर लिया कहीं से, आपने मीडियम कहीं से कर लिया, टफ लेवल आपको पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उसके बाद आप ये बुक उठा लेना एंड ट्राई टू कवर दिस 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक. एंड देयर यू कैन जज योरसेल्फ कि आउट ऑफ दिस 30 जितने भी इजी थे क्या वो मैं कर पाया. ओके गुड, कर पाया. तो मीडियम थे क्या मैं वो कर पाया, गुड. एंड टफ थे क्या मैं वो कर पाया या नहीं कर पाया. सिंपल सी बात है. दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर हेडिंग फॉर. अगर आप पहली ही बार ये 30 के 30 क्वेश्चंस लेके बैठोगे, अगर आपने कंसेप्ट समझा, अगर आपने सॉल्ट एग्जाम्पल किया और सीधा आप 30 पे आके गिरोगे जहां पे मिक्सचर है, फिर आपकी प्रॉब्लम होगी. राइट, आई विल गिव अ क्विक एग्जांपल. देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टाइप्स आते हैं. जैसे आपका एक नॉर्मल हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, फिर आपका हो गया से सक्सेसिव डिस्काउंट का एक हो गया, एक आपका हो गया मार्जिन वाला, एक आपका हो गया ट्रेडर चीटिंग वाला, एक आपका हो गया 4 CP ऑफ अ प्रोडक्ट इज लाइक 5 प्रोडक्ट का SP एंड ऑल दैट स्टफ. राइट, ठीक है. सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज बेसिकली, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन जो है 100 का जो बुक था वो 150 में दे दिया, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये जो टाइप है आपकी ये क्वेश्चन का, ठीक है, ट्राई टू डू सेम टाइप के क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द बुक्स ABCD. ठीक है, ट्राई टू डू ये वाला टाइप फ्रॉम ऑल द बुक्स. सो गो टाइप वाइज, गो विद द क्वेश्चन. नाउ अस्यूम करो कि ट्रेडर चीटिंग इज द टफेस्ट टाइप फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस, दो इट्स नॉट. जस्ट टेक एन एग्जांपल हाइपोथेटिकली. राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये आता है, ये आता है, ये आता है, और मुझे ये भी आता है. बट यहां पे थोड़ा सा मैं काइंड ऑफ आई गेट काइंड ऑफ मुझे नहीं जमता है. आई काइंड ऑफ गेट लिटिल वरीड अबाउट इट बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है. सो व्हेनेवर यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर, यू आर डेफिनेटली गोना लीव देम. ओके, और जितने भी आपके पास बुक्स है, जितने भी मटेरियल आपके पास है, ये हर टॉपिक का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा. सो गो टाइप बाय टाइप, देन यू गो बुक बाय बुक. तो इजी वाला बुक पहले उठा लो, मीडियम वाला बाद में उठा लो, और जिसमें पूरा का पूरा कॉम्बो है, सो कॉम्बो वाले बुक को एंड में रखो. नाउ जब भी आप ये कॉम्बो वाला बुक करोगे या फिर जब भी आपका राउंड 1 होगा, राइट, डू नॉट ट्राई टू मार्क योर बुक्स. डोंट ट्राई टू मार्क एनीथिंग ऑन दैट. हाँ, इजी वाला कोई बुक होगा जहां पे एकदम ही इजी लेवल के क्वेश्चन लाइक ऑल क्वेश्चन लाइक फकॉल टाइप्स, ठीक है, मार्क करो, छोड़ दो, बिकॉज इट्स डन एंड डस्टेड फॉर एवर. बट जो बुक है जहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन है, राउंड 1 में उसको मार्क मत करना प्लीज. उसको खाली आप सॉल्व करना, किसी पेपर पे सॉल्व करना. देन व्हाट यू डू, से राउंड 1 आज हो गया आपका, से आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंट या फिर ट्रिग्नो या फिर लॉग के आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए, एंड यू आर गेटिंग इट वेरी वेल, यू आर डूइंग रियली गुड, फाइन, गुड. व्हाट यू डू इज आफ्टर 7 days, ठीक है, go back to the same book, take those 30 questions back again, put the time on the watch for like 30 odd minutes, ठीक है, and try to take that book or try to take those questions as a sectional test. So use this book as a question bank rather than anything else. So my funda is, if I were you, I will use these books as a question bank. So once my concepts are done, okay, once my understanding is done, the types of questions is done, I know इस book में, rather I know each chapter में क्या concept लगता है, क्या type के question है, कौन सा easy है, कौन सा medium है, कौन सा tough है. इससे ज्यादा important है मुझे कौन सा आता है और मुझे कौन सा नहीं आता. And that's what will help you for CAT. CAT is not all about marking the correct question. It's all about leaving the questions which you are not comfortable at. As simple as that. So once you understand this, right, and once you have given this 30-minute question round 1, round 2 में 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, if you are getting a same result, मतलब the result has to be good by the way, because होता कैसे, 2 दिन एक क्वेश्चन, लाइक 2 दिन एक चैप्टर कर लिया, 2 दिन में आ गया, मजा आ गया, लाइक सब कुछ आ रहा है, 4-5 दिन के बाद उठा लोगे, यू आर बैक टू जीरो. मतलब आइडिया नहीं है कि मैं किन्हें क्या किया करके, मुझे वापस मेहनत लगानी पड़ रही है सब क्वेश्चंस करने के लिए. सो दैट्स नॉट हाउ वी स्टडी. Do it once, do it for all. So 10 दिन के बाद भी अगर आप वो बुक उठाते हो, make sure that all the questions you are able to solve, and if you are able to solve, guys, you are done and dusted for that entire chapter till CET. Take my words. Fine. तो ये आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. Focus on quality rather than quantity. ठीक है? And that is important. That's the reason it is important कि आप bifurcate करो आपके
मटेरियल को, बिकॉज मटेरियल इज एट द एंड ऑफ द डे इज नथिंग बट अ क्वेश्चन बैंक. ठीक है, भले मैं आपको बोलूँ इस क्लास का मटेरियल बहुत अच्छा है, बट आपके क्वेश्चंस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके फंडामेंटल में ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, फिर उस मटेरियल का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मटेरियल विल नॉट टेल यू हाउ टू स्टडी. सिंपल सी बात है, बिकॉज अगर अच्छे क्लास का मटेरियल में लेके बैठा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो तुमको कुछ भी नहीं आएगा. इट्स लाइक somebody is handing you over BMW का की एंड somebody is telling you कि भाई जा BMW चला, बट आपको पता ही नहीं हाउ टू ड्राइव, तो वो BMW is not going to help you. So try and understand. Use the material efficiently and effectively. ठीक है? And once everything is done, guys, if you're my student, if you have my online, product, then once everything is done, I want you guys to kind of go for topic-wise test. Trust me, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, माना ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इसमें जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है. इसके बाद जब आप जाके किसी भी टॉपिक का, लॉग हो, ट्रिग्नो हो, जब आप जाके किसी भी टॉपिक का आप अगर एक ऑनलाइन टेस्ट देते हो, एंड इन दैट टेस्ट इफ यू डू रियली वेल, boom, you are right on the spot. Your preparation is amazing, spot on. ठीक है, you don't have to worry about anything. Now think about this. Now be with me, okay? So topic 1 done, topic 2, 3 done, topic 4 done. So you guys are gonna do like get one by one all the topics done. जब आपका ये सब टॉपिक हो जाएगा with a good understanding, right? You don't have to do 100%. You just have to do like 70 to 80%. Once you are done with all these things, right? Well, in your so that's the point. So once you're done with the topic wise test, and if all the topics are done very well, right, you can then move to the sectional test. And if you're getting a result in topic wise test, you will get result in your sectional test, and that's how you'll be getting result in the final exam, right? So always remember, use the material effectively, efficiently, and do not just try to use the material for the sake of it, right? Now, I hope you guys have understood how to use the material. If you have any doubts, you can simply get in touch with me on my channel. You can put a comment for the video, and do subscribe to my channel because I'll be making such videos further also. Thank you so much for your time. Take care.